Hello everyone. I hope everyone is doing great. So today we will see one important question of LeetCode which is related to joins. ओके हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे हम करते हैं और कौन सा जॉइन इसमें हमें लगाना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. ओके. The question is we have a two table. One table is a person table and second table is a address table. Okay. In person table we have a given person ID, last name, first name. Okay. And the type of person ID is integer and last name is a varchar and first name is also varchar. Okay. Person ID is the primary key column with a unique value for this table. ओके. सो ये कह रहे हैं कि जो हमारा पर्सन आईडी है वो एक प्राइमरी की है और विद द यूनिक वैल्यू लाइक 1 2 3. यू कैन इमेजिन लाइक दैट. दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आईडी ऑफ सम पर्सन्स एंड दियर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ओके. तो ये बोल रहे हैं कि ये टेबल जो है कंटेन करेगी हमारी पर्सन आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम. ओके. एंड वी हैव अ वन मोर टेबल दैट इज एड्रेस. ओके गाइस. इन एड्रेस टेबल वी हैव अ कॉलम नेम एंड टाइप. In column name we have columns address id, person id, city and state. Okay. And they have defined the type of this one, and address id is the primary key for this table. Okay. Here we see person id is the primary key. In address table we have a address id is the primary key with the unique value, and each row of this table contains information about the city and state of the one person with the id person id. Okay. So आप 1 person विथ आईडी पर्सन. ओके. वो ये कह रहे हैं कि जो इस टेबल की जो एक पर्टिकुलर रो मान सकते हो आप, मतलब हर एक रो, ये कहना चाह रहे हैं ईच रो ऑफ दिस टेबल मीन्स हर एक रो इस टेबल की जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है सिटी की और स्टेट की ऑफ वन पर्सन. लाइक एक पर्सन है कोई, वो उसका सिटी क्या है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है और उसकी आईडी क्या है. ओके. आईडी मीन्स पर्सन आईडी क्या है. ओके. सो वी कैन सी person id we have here and person id we have here. Okay. So that means we found common column name. Okay. And we'll see this one person table we have 1 2 and address table we have a 1 2 and 2 3. Okay. See, here we have a common column name is a person id. Okay. And here we have a common column name is person id as well. Okay. So that means we need to join with this using this. Okay. And how will identify which join we need to perform. Okay. So what they are trying to say, they are saying write a solution to report the first name, last name, city and state of each person in the person table. That means they want all the information of the this person table. Person table means this table. Okay. And if the address of the person id is not present in the address table, report null instead. That means they want all the records from the person table, and if any record is not matching with the address table then we need to return as a null. So आप लोगों को तो याद ही होगा ना, जब जैसे कि हमारे पास कोई टेबल है, उस पर्टिकुलर टेबल का हम एक सारा रिकॉर्ड ले रहे हैं और दूसरे रिकॉर्ड से अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम नल रिटर्न करते थे. तो वो हमारे किस में था, लेफ़्ट ज्वाइन में था. राइट. हम लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लेते थे और राइट टेबल से हम मैचिंग रिकॉर्ड्स लेते थे. जो हमारे लेफ़्ट टेबल के जो भी रिकॉर्ड राइट टेबल से मैच कर रहे हैं वो वाले रिकॉर्ड्स. दैट मीन्स अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें नल चाहिए. राइट. ये यही कह रहे हैं ना. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम आउटपुट में आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है और सिटी आ रही है और स्टेट आ रहा. ओके. तो
यहाँ पे हमारा जो अगर ये एलन है, बॉब है फर्स्ट नेम, एंड लास्ट नेम इज वैंग एंड एलिस, एंड सिटी. ओके, so for Alan, person ID is 1. Here see, we don't have any person ID 2 here. So city column हमारे लिए यहाँ पे blank आएगा, जिसकी वजह से, और स्टेट भी हमारा blank आएगा क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे पर्सन आईडी नहीं है 1 के लिए. ओके, इस एड्रेस टेबल में. अगर हम सेकंड की बात करें, 2 जो सेकंड नंबर पे है उसके लिए हमारे पास आईडी है सेकंड, और उसकी सिटी हमारी न्यूयॉर्क सिटी, एंड स्टेट जो है वो है न्यूयॉर्क. ओके, so that's why we are getting this information. Okay, I hope this is clear to everyone. We can write down the query now. Okay, so query write करना बहुत ही easy है guys. आपको just select करना है जो भी इन्होंने बोला है. We start with the from clause. Okay, from table name is person. Okay, I'm taking alias. We are performing left join. Okay, and we have a table address aliasing as a. Okay, now on which basis I am joining? P dot person ID. In person table we have person ID, right? So we'll write down the person ID. I'm copy pasting this one. Okay, equals to a dot person ID. Okay, so join is done. We just need to select the columns. Okay, select what column they want. P dot person टेबल से हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट? सो हम यहाँ से फर्स्ट नेम लेंगे, कॉमा ए पी डॉट. ओके, लास्ट नेम. ओके, एंड देन व्हाट वी वांट, सिटी. सिटी हमारे किस कॉलम में? एड्रेस कॉलम में, राइट? ए डॉट सिटी, एंड देन व्हाट एल्स वी नीड? ए डॉट स्टेट. ये कॉलम्स हमें चाहिए और लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी. Okay, see, we are getting expected output. What we need output is this, expected is also this, and this is accepted. Okay, now we can submit. Okay, this is good. So for today this is enough. We'll discuss more questions in later videos. Bye bye guys, take care, happy learning.